Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. I'll try to record this one. So the topic is this of today's discussion, and that is complications of the acute myocardial infarction. After the acute myocardial infarction, specifically speaking about the ST elevation myocardial infarction, and that is called the also known as transmural infarction. At one time it was known as Q wave infarction. At one time, or acute myocardial infarction at that time, it is old terminology. The whole thickness of the myocardium should be gone. ST elevation means an NSTMI, which is also known as non-transmural infarction, and the muscles around the transmural around the cavity are affected. Left ventricle, right ventricle, atria, 1 millimeter, 2 millimeter thickness, not more than that. And third was ACS was unstable angina. The unstable angina complications are different. We are covering the complication of acute myocardial infarction with the heading of STEMI or non-STEMI. So these complications which I want to discuss, they are more often seen in ST elevation myocardial infarction rather than non-ST elevation myocardial infarction. The problem with an NSTMI is its diagnosis. The management is definitely correlated with the unstable angina, same. But outcome after many years is dangerous. For example, 5 years, remote problems, they are no problem. 4 years, 5 years, 6 years afterwards. Mostly these patients are not followed up and they die because of the sudden attack of the coronary syndrome rather than the STMI is concerned. Because they thought that they are all right now, there's no problem. Everything is fine. The risk stratification was already there, higher for the non-STMI, but they do not compile compliance rather. That is why it is really कहते हैं कि unexpected होता है वो. That is a little bit unexpected. Dramatic event होता है afterwards. 5 years से अचानक sudden. So the complications are manifold, but it will cover most of the knowledge of the cardiology. The thing is this. And this is the thing. Are the presentation is clearly seen by you or not? Clear. Madhya, clear, absolutely clear. Yes, sir. Fine. So the complication of the myocardial infarction means most of them it is the SCMI, and its mnemonic is death, whether according to them, death, arrhythmia, rupture, free wall, or septum or public muscles, or tamponade, heart failure, valve diseases, mitral valve, aortic valve, aneurysm of the ventricle, delayed complication. They are Leather syndrome, delayed complication, embolism, mural thrombosis, acute problem, recurrence of the mitral regurgitation or mitral valve prolapse can occur. Acquired condition is acquired condition, late complication. This is the dearth weather. Now take one by one. Death immediate death occur because of what? Due to the severe cardiogenic shock.
So 100% blockage of the left coronary artery at its origin, where it is originated, from the sinus of Valsalva, left sinus of Valsalva, lateral left sinus of Valsalva. If block occurs there, hardly the patient will survive. In 5 seconds he will die. Assalamu alaikum warahmatullah. On the right side, you say that there will be no time for the left side. So, sudden it is. I've seen two cases in my life. You see that the person died in the sajda because of the 100% blockage due to any reason occurs at the left coronary artery origin. And the third cause is 100% blockage of the proximal anterior descending artery, which is supplying most of the ventricle, 70%. Left ventricle, the whole supply, a few part is also supplied by the vessel, that is the anterior descending artery. Because it block it, and definitely failure occurs so acutely that the person will die in 1 to 5 minutes of time. 5 minutes, not more than that. Rupture of the left ventricular wall means that transventricular infarction can cause weakness so much, and the pressure inside the left ventricle and diastolic pressure was much, and it communicates with pericardial sac, and there is a hemorrhagic pericardial effusion that is called cardiac tamponade. Inshallah, we will discuss afterwards the pericardial diseases that you can understand this. Cardiac tamponade means that hardly 10 minutes. If it occurs, the patient will die within 10 minutes. Immediate जब दिखते हैं, when I will write immediate, according to the American Heart Association, it means then 15 minutes to 30 minutes. Because here it is within 15 minutes, rather 20 minutes. So, somebody want to join Aisha Amjad. Immediate death occurs because of these causes. There are 4 causes. It's written here. The final year students, the commonest cause, A, B, C, D, death, immediate death occurs. Obviously, A, B, C, D, one, but choose one. Here it is due to severe cardiogenic shock, circulatory collapse. Commonest one is the severe cardiogenic shock. You can't handle properly in the time. Time actually factor is important in this case. That's why the patient die 5 to 10 minutes, 15 minutes, under 15 minutes. Can't manage it on the time. Time is important. The other complications are arrhythmias. All arrhythmias which I have previously told you in my previous lectures, and it consists of more than 8 lectures or 2 hours. 16 hours discussion was done on arrhythmias. That's why I have written after acute myocardial infarction, the patient was shifted after the fibrinolysis has been given or PTC has been done in ICU, and the nurse monitored this ECG now. What is the problem is seen here? Can anybody answer this question? Look, there is not a regular rhythm. Definitely, the important thing here is a P
wave morphology varies in different complexes, different morphologies are there. What this condition is known as wandering pacemaker. It is the earliest sign appearing on the ECG. We cannot pick it up easily. It's very difficult. Otherwise, somebody will tell you that it is nothing but atrial fibrillation. No, it is not atrial fibrillation. It is actually the wandering pacemaker causing this type of a problem because it's wandering on the right side and left side, wandering, wandering, wandering. If you interrupt here now, the chances of arrhythmias are less and less. The chances of arrhythmia will become less and less. It means less and less. Somebody want to join here? Hmm. Maria Junaid. Welcome, Maria Junaid, in this discussion. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. My secretary is here with me. Okay, my secretary is here, and, and he is telling me some problem related with the patient. So I will again say, Maria, please report this electrocardiogram. Report it. Report it. This electrocardiogram. Maria Junaid. What is this? Confusion. What is the reporting inference after acute myocardial infarction? Earliest change is this. ये क्या तकला है? तकला है. Hmm. Can you answer this question or not? So there is a lot of vibrations in the ECG. There's a often spikes. Spikes. Is there spikes? What about the P4 P morphology? It's variable or not? Yes, sir, it is relatively variable. Definitely, the morphologies are different in the different ECG complex. What is called as? Sir, wandering pacemaker Yes, is my most common wandering knowledge. pacemaker is the correct answer. That's all. Other than that, should not be given because other findings are also there. You should say after acute myocardial infarction, the commonest and earliest warning sign is wandering pacemaker missed by everybody. I can miss. Fine. So Yes, sir. this is you should understand that this type of ECG are misleading. Monitor this is a monitor actually lead, not 12 lead ECG. Now patient developed this type of thing after 2 hours of AMI. Maria, you can easily tell us. Easily tell us. Sabha can tell us. Maria can tell us. Why not? It is irregular, rhythm or not? It is irregular rhythm or not? It is irregularly 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 irregular rhythm
Yes, sir. The rhythm is irregular as well as the Spikes. P wave is not Spikes. that defined. You can't describe P wave. It is the spikes. It is the spikes. Yes. Yes. P spikes are there. If isolateral line is drawn, it is P spikes. It is slow atrial fibrillation, missed by many of them. Again, it is missing diagnosis. मिस हो जाता है because people are focusing on other things. इसमें जो है ना the strain pattern is seen. Look the T wave on the left, descending and ascending. It's different. Asymmetrical. Asymmetrical means nothing, but the strain on that side, जो भी ये lead, whatever it is, from the right side lead or left side lead. वो उससे बहस नहीं है. The thing is this is the slow atrial fibrillation, and you have to manage now this atrial fibrillation. Otherwise, it will go behind your power. You have to diagnose now. Now the third thing is this: after 2.5 hours of the STMI, this type of ECG was seen. ठीक है मैं जाऊं बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज 8 बजे निकला हूं अच्छा इतनी रश नहीं पानी थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच about the information याद किया कैसी बात कर रहे हैं सर information you have given, and inshallah I will. अरे पेशेंट आए इंशाल्लाह Okay. बेफिक्र है यहीं आ रहे हैं सारे Okay, fine. जो मुझे फोन करता है मेरे पास Yes, ही आता है yes, because मैं सब बता देता हूं कि सर के पास जाओ right. ओके Okay. एहतियात से उतरिएगा उसको सीढ़ियों से. This is complex number 1, cardiac complex 2, cardiac complex 3, cardiac complex 4, 5, 6, 7, 8. Isoelectric line should be drawn, and then see the 1 and 2. The third complex comes early, and there is a Premature gap. phenomenon. A gap. सर एक टॉपिक लग रही है ये. Yes, of course, it is a topics. Premature are there are two type of topics. One is the escape phenomena, second one is the premature. Because if it comes early, it is premature. Where it is coming from? Look for the P wave. Here I got P wave here. This is the P wave. It means that it is coming from the atrium. What is called as APC, atrial premature contraction. Regularly it occurs. Here again. अगर तो hurried it, you will see in very very quick manner तो वो फिर मिस हो जाएगा. Atrial premature contraction in the normal people are benign phenomena. I have told you previously. But in case of structural heart disease, ischemic heart disease, metabolic heart disease, inherited heart disease, genetic heart diseases, these APCs are important. Specifically speaking, in the area of the Peri myocardial injury. This is very, very important. Again, it is a sign that appears in the electrocardiogram only, and you can pick up here for the further problem which is you will face in 1 hour or 2 hours after 3 hours. APCs are the recognized most easily recognized. देखना मैंने अब चेंज कर दिया स्टेटमेंट को. Most easily earliest, most easiest to approach the ECG in the world, globally speaking, is the atrial premature contractions. जो warning pacemaker का तो मैंने बता दी the initial sign comes and goes. It's immediately converted into another arrhythmia. The nurse was actually very very clever. She detected and told the doctor there is come and see this electrocardiogram. APCs finally have the commonest arrhythmia, easily approachable. लगे आएगा ग्लोबली आफ्टर बायोकोड इन्फेक्शन. अब उसमें ABCD डाल दीजिए.
इसमें उसके बाद पीवीसी डालें पहले, फिर एपीसी डालें, देन एट्रियल फिब्रिलेशन डालें, एट्रियल फ्लूटर डालें, ABCD। इसमें एक पिक कर लें, APC is the commonest one, then PVCs is another problem, which is rather more common, less common than this, but it is also a very common problem. इसको भी देखो, सेम चीज है, इसमें जंक्शनल है ये, सेम थिंग, premature here, it is premature, there is no P wave, followed by a compensated pause, and then again sinus rhythm. So this is the premature junctional contraction, PJC. It is more harmful arrhythmia than the atrial premature contraction. Always pathological. It can be benign नहीं होता, not at all. The page PJC is another complication. You can see and report this electrocardiogram now. It's a 12 lead ECG done after 3 hours of the fibrinolytic agent has been given. And now take this ECG. E2 is the longest piece. इसमें है ना कॉम्प्लेक्स, वरना फिर यहाँ पे देखें 2 में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ है, फिर मल्टीपल जो है ना वो आपको जो है ना फिनोमेना नजर आएंगे, प्रीमेच्योर फिनोमेना, PVCs आर देयर। तो मल्टीपल PVCs आर देयर और नॉट of the different Yes, size, sir. of the different size, slightly very near to it, rather. So PVC is the another common arrhythmia you noted here. तो इसको साथ जमा करते हैं आगे जाने के लिए। Now see this first complex, वही उसी तरह से देखें। The thing is this: second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and misbeat occur here. Escape phenomena occurs, and then again the beat occurs. Where it is arising from? Atria. Yes. So it is atrial escape beat. Escape phenomena are more dangerous than premature phenomena. देखो हमने topics के लिए हमने से देखा। Escape phenomena means that they are more dangerous rather than the premature phenomena. Comparatively, treatment will be the same. I will elaborate it. इसमें the same thing is happening here. Very long pause here. See, very long pause, and then beat occur afterwards, because it occurs afterwards. This is the originating beat. There is a compensatory pause here. There is a misbeat. This beat should occur here rather than here. Escape phenomena without P wave. It's not P wave. This is Q wave. So it is Junction. junctional escape beat. Escape. JEB. And comparatively here, the same thing. Pause, a compensatory pause, and this occurs. Very broad complex. Very broad complex. This is the escape phenomena originating now in the ventricles. This is the ventricular escape beats. Taken a premature vertical contraction and escape beats, ventricular escape beats, VEB. Mortality of the escape phenomena are more than premature phenomena. Always remember this.
When you identify this, now here the thing is this: you are in ICU. All measures are in your hand. Select the proper drug with the least complication and very rapid action on cerebration. And it should be a broad spectrum. Should be very broad spectrum. If you go Xalogen, yes, it can work. Why not? But it's got a problem. Side effects are there. These side effects, flecainide, for example, and other drugs are also available. But only one drug is for all arrhythmias which I have shown. They use amardron in most of the cases. In a low dose, amardron should be given to see in a drip. In a drip, you will IV infuse. When this phenomena is gone, immediately stop that drip. This is the only way you can handle it. Otherwise, oral drug will take time. That is why you should recognize and do it now. Whether it is whatever it is. It's a previous all arrhythmias. Broad spectrum drug, very quick acting. Most of the ICU people use this drug rather than the other drugs are available and they have got their advantages, but their side effects are more. In these patients, usually the BP down always because of the malfunctioning of the ventricles. So amantone will not cause hypotension, severe hypotension neutus. The only thing is the bradycardia. That is the problem with this drug. Otherwise, so it is fine. Fine drug. Very nice. Because for the short period of time you can use it. Followed by oral drugs for a few weeks and see the thyroid functions after 1 week. If it's all right, then prolong this drug to 2 weeks. देखो ये मैंने बता दिया आपको एंड द थिंग इज दिस कि इसमें जो है ना कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है न्यू ड्रग इससे भी न्यू ड्रग्स हैं अवेलेबल ही नहीं है वो बताना कि कोई फायदा नहीं है ना उसका वो मानेगा कोई भी नहीं तो कोई ऐसी बात करो जो माने एक्सेप्टेबल हो आपने क्या इस्तेमाल किया है भाई ये देखा है मारिया जलील हैव यू सीन हाउ टू यूज दिस ड्रग कॉड्रॉन No, No, sir. sir. हाँ ये गलती हो गई आपसे कॉड्रॉन इज हाईली efficient commonest drug which is used. Have they told them to use it or not? ये बताएं. सर So बेसिकली दे basically, डिड they did नॉट not कवर द cover the एरिथमिया arrhythmia पार्ट part इन in पॉड pod. सर सर अभी अभी हमारी हमारी रोटेशन रोटेशन लगेगी तो लगेगी तो शायद तब शायद तब पढ़ा दें पढ़ा बट दें बट पहले पहले लेक्चर्स में लेक्चर्स नहीं में पढ़ा रहे हैं If the new thing they will say, please tell me because I am at my home. I don't know what else is going on. I don't know about it. If there is something ओके new, सर Okay, आई sir, विल I will. इन्फॉर्म you will inform me, please. Now, thou report this electrocardiogram. Let's see the long lead 2 here. Long lead 2, this is long lead 2. First of all, the complexes are small and big one and they are irregular rhythm. This is the first part, important point. All leads should be checked for any P wave, evidence of the P wave, because usually this type of ECG, you know what it is. Irregular rhythm without P waves. High atrial rate, it is very high atrial rate, is buried into the complex. That is rapid atrial fibrillation. ये है या नहीं है ये बताएं. यस Yes, सर sir. Yes. इट It लुक्स looks लाइक like दिस there is हाँ only लेकिन P wave there are emphasis. other findings as well.
There are other findings in this ECG as well. But only thing which I am want to tell you that the thing is this only these complex. Look, ये पी है ये पी है फिर पी है फिर पी है फिर पी है फिर पी है यहाँ पे भी ऐसा ही है आगे जाके देखिए क्या हो गया तो फ्लूटर में चला गया वो फ्लूटर फिब्रिलेशन जो होते हैं हमेशा याद है कि पोलर एंड होते हैं 100% जो है ना आपको बहुत कम केसेस मिलेंगे दैट फिब्रिलेशन प्योर रैपिड उसमें कुछ कंटेंट जरूर फ्लूटर का होगा अगर आपने सही तरह देखा है ये 12D ECG किया है किसी ने पूरा अभी इसमें पूरा नहीं है V1 तक लिखा हुआ है इन्होंने V4 अभी रहती है रीड्स देन डेफिनेटली फ्लोटर कंटेंट विल बी एडेड हियर अब इसको आप प्रीडोमिनेंट हमेशा इस्तेमाल करें प्रीडोमिनेंट एट्रियल फिब्रिलेशन और प्रीडोमिनेंट एट्रियल फ्लूटर दैट्स ऑल वो कवर कर लेगा वो आपकी बात ये ज्यादा अच्छी तरह होना चाहिए पोलर एंड है इसके दो इसके दरमियान और भी चीजें होती हैं एक पोल पे फिब्रिलेशन है एक पोल पे फ्लूटर है दरमियान में और भी रिथमियां हैं जो इसमें भी हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है मैं नहीं वो कर रहा डिस्कस नहीं कर रहा छोड़ फिर वो बोलते हैं कि इसको देखें जरा इससे पहले वाले को दोबारा भी देखें व्हाट वाज द रेट ऑफ द वेंट्रिकल it is 150 the 150 irregular. So it is irregular but it is more than 150 अगर आप yes. अगर देख लें आप स्मॉलेस्ट को तो 155 होगा तो वेंट्रिकुलर रेट जो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में ये प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया है उसके लिहाज से प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया है डेफिनेटली इसलिए अगर पी आ जाए इसमें तो फिर इसके साथ आप ये कहेंगे कि एक पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में है विद हाई वेंट्रिकुलर रेट ब्रैकेट paroxysmal tachycardia seems to be supraventricular tachycardia तो ये बात मुकम्मल होनी चाहिए ये और भी फाइंडिंग है इसके अलावा मैंने कहा फ्लूटर का कंटेंट भी है इसमें फ्लूटर का कंटेंट इसमें मौजूद है Now here is the same one that is the rate ventricular rate is much higher but without PVA there is no PVA at all and the rhythm seems to be not irregularly irregular irregular नहीं है और करें मैं आप देखें आप के देख लीजिए पता चल जाएगा irregular rhythm and regularly irregular rhythm there are two things irregular rhythm occurs which जिनको जो मेरे in my knowledge in atrial fibrillation whether it is slow atrial fibrillation or it is a rapid atrial fibrillation it may occur at the multifocal atrial tachycardia it is the irregular rhythm and thirdly in cases of the multiple focal PVCs that is called I say the malignant PVC rather PVC पे डिस्कशन तो हमने शॉर्ट कर दिया था मैंने बताया I already told you that PVC will take 3-4 hours more than that because I inshallah only I will discuss at one time only PVC and the difference between the SVT and the VT and the conception of the reentrant tachycardias. For the final year, it is not. For the house officer, it is all right. Because इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे समझ में आ गया तो ठीक है फी सबिल्लाह नहीं आया तो कोई बात नहीं है बिकॉज यू आर नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है वो मैं बाद में बताता हूँ ये तो रेट डिपेंडेंट डेफिनेशन है ये तो सीधी सीधी बात है रेट डिपेंडेंट डेफिनेशन है ना
अब इसका रेट आप निकालें आप, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, कि पता चल जाएगी। अब इसमें जो अगर आप रेट निकालेंगे तो ये आएगा 270 प्लस। सारी डाउन गोइंग वेव्स हैं, सारी की सारी डाउन गोइंग वेव्स। रेट जो है ना इसका 270 250 मैंने टच करा कि उसमें भी इरेगुलरिटी है, तो उसको जमा कर भी दें तो 250 अराउंड है। 150 to 250 जो होता है वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है। चलो इस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया मान लेते हैं बिकॉज ऑफ द proportion here which is seen at rate dependent definition. One lead is seen although only one monitor lead है, ये monitor lead है। तो ventricular tachycardia means that you have got only 5 minutes to 15 minutes to recover this patient. I will say 5 minutes to interrupt ventricular tachycardia. It is a broad base or complex tachycardia. You can say like this. But the ventricular tachycardia is the dire, D-I-R-E, dire medical emergency. Remember this point. As far as supraventricular tachycardia is concerned, it may arise from the atria, that is called process of atrial tachycardia. If it has P waves, no P waves, then it is a junctional tachycardia. That is combine अगर करें इनको दोनों को variants को, that is supraventricular tachycardia or narrow complex tachycardia. Most of them, more than 90% of cases. But from the ventricular are concerned, 90 to 95% of cases occurring as broad complex tachycardia, not all, broad spectrum tachycardia, and it is a dire medical emergency. For the supraventricular tachycardia, you have to follow the management plan which I have already told you previously in my lecture which I have given on arrhythmia. You have to plan like that. If you treat the ventricular tachycardia as SVT, the patient will die. ये problem है। But if you treat the SVT as VT, तो फिर कोई problem नहीं है, no problem. लेकिन अगर SVT है, पेशेंट को जो था वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया था, आप समझ रहे हैं कि दिस इज SVT है, कंफ्लिक्ट हो गया। आपने क्या किया था, मैनेजमेंट प्लान जो उसका था SVT का, जो मैंने बताया था बाकायदा लिखा था, आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ये जो है ना रिकॉर्डेड के पुराने हैं मेरे पास, आई विल सेंड, नो प्रॉब्लम। टू कट टाइम, the SVT management should not be applied in VT, but VT management can be applied. एरर है, ह्यूमन एरर है, इन SVT तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। SVT is not dire medical emergency, you can handle it in hours, no problem. The VT is the dire medical emergency, patient has to die, कि आपने अपनी जो पाथ है हदनत सिरातुल मुस्तकीम वाली चेंज कर दी और डेथ पाथ की तरफ भेज दिया आपको, डेथ पाथ पे चला गया। You revert back only by one thing, that is BLS followed by ACLS. Maria Jalil, have you learned BLS and ACLS? No, No, sir. sir. Sir, Sir, we we know the know the basic of basic of BLS, but BLS, not but नहीं not बेसिक deep, बेसिक की like बात नहीं they करो। do they do not not taught फॉर us. एग्जाम्पल योर फादर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, और मदर और सर्वेंट नीचे गिर गया, आपने पल्स देखी, नो पल्स, वेरी वीक पल्स हो रहा था, कैरोटिड पल्स, तो यू हैव टू अप्लाई BLS अंटिल द एम्बुलेंस अराइव्ड, ठीक है ना, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, एंड देन ACLS शुड बी डन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन हु नोज, कि मॉनिटरी लगा के देखना, जो एम्बुलेंस जो है ना इनके पास मौजूद है, अमन एम्बुलेंसेस हियर इन पाकिस्तान, they know the technique to survive this patient till the NICBD या जो नियरेस्ट सेंटर जो है ना वो पहुंचाते हैं उसको, तो ACLS वो स्टार्ट कर देते हैं, एडवांस कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट। ये जो होती है ये
रजिस्टर्ड होता है इसका, BLS का, ACLS का, तो दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन बनती है 20,000 $25,000 की, ज़्यादा हो गया है तो 25,000 लगा लें। I request all the house officers, please register yourself in NICVD। PDC वालों को एट वन टाइम वो कराते थे, अब नहीं कराते, डाउ में कराते हैं, अगर चाहे तो वहाँ से कर लीजिए। रजिस्टर करेंगे देन दे विल गिव यू अ कार्ड ऑफ BLS ACLS, वैलिड होता है 2 years तक, उसके बगैर वो अंदर आने नहीं देंगे USA में। फर्स्ट क्लास टाइप भी क्लियर कर लिए तो फिर फायदा कोई नहीं। एंड मैं तो आपसे एक और बात कहता हूँ, यू शुड नॉट बी इशूड MBBS degree until you know BLS and ACLS by yourself। 3 चीजें जो है ना मैं मांगता हूँ MBBS सर्टिफिकेशन, इसीलिए मुझे उन्होंने दे हैव सेपरेटेड मी फ्रॉम, उस सोन से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं तो आर्ग्यूमेंट कर रहा था उनसे। All students who are clearing the MBBS should know how to do BLS, ACLS and tracheostomy, and urgent tracheostomy। 3 things with English में हुआ, ये करना आता है उनको, then they should be licensed, otherwise they are called licensed killers by the population। Now आपका impression, the impression you have created on the Pakistani population is that they are very weak medical officers there। That's why they have started the licensing program, वो भी 3rd class है, उसमें भी मुझे शामिल नहीं किया। They have not included me। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि प्रोफेसर मसूद हमीद को तो कम से कम एंटर दें उसमें, उन्होंने वो भी नहीं मानी बात। अदरवाइज अगर आपको देखें, अगर पेशेंट विल डाई बिकॉज योर नेग्लिजेंस है, अगर ACLS कर देंगे तो इन न्यूयॉर्क सिटी मोस्ट इक्विप्ड मॉडर्न hospital and biggest hospital in the world, those who have actually they have given 2 years 3 years in that hospital, they have masterpiece knowledge, they have got masterpiece practical knowledge की बात हो रही है, theoretical की बात नहीं है। then इसमें जो है ना, how you do ACLS advanced cardiac life support, इसमें I will, देखो मैं तो remote area में, I am sitting in Safura, I'm here in Safura and you are far away। Hiba Arif wants to admit, welcome Hiba Arif, talking about this ECG. The management is this: ventricular tachycardia, broad complex tachycardia, and 1 BLS at the primary care center, and followed by the ACLS by the secondary care or tertiary care center immediately. Otherwise, the patient will die very soon, very soon। लेकिन मैं तो स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ। Now the report, this ECG, ये तो हलवा है। हाँ भाई, what is this? Can you tell me? Are you listening me or not? Anybody answer? Sir, atrial Sawtooth appearance. Sawtooth Atrial appearance है, it is irregular नहीं। सबसे पहले you tell me that it is irregular pulse and there are content predominant atrial fluid। लेकिन Yes. ECG जो है इसमें जो है ना अभी पूरा इतना किया नहीं किया है, रेजिम स्ट्रिप उन्होंने कर दी है, अच्छा किया इसको। अदरवाइज ये कि इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते ना, कॉम्प्लेक्स बहुत
विद, देखिए ना इसके अंदर जो इसको देखें आप, ब्रेडिकार्डिया है और सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, तो फ्लूटर, प्रीडोमिनेंट फ्लूटर विद ब्रेडिकार्डिया, ये बताना पड़ेगा आपको, साथ में बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि इसमें जो है ना अगर आप हार्ड्रॉन इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए फ्लूटर का ट्रीटमेंट फिब्रिलेशन से अलग होता है। दैट इज वाई फ्लूटर के अंदर जो है ना वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कहती है कि आप कार्डियोवर्जन करेंगे डायरेक्ट विदाउट एंटीकोगुलेंट, देन फॉलोड बाय दी फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, ये वो प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल की बात हो रही है। लेकिन फिब्रिलेशन अगर है, इफ देयर इज एट्रियल फिब्रिलेशन, you could go for the pharmacological cardioversion first. If it fails, क्विक एक्टिंग जो है ना एंटीकोगुलेंट देके या एको करके, आई मीन टू से दैट एंडोस्कोपिक, उनके पास तो हर चीज मौजूद होती है ऑन टाइम, एंडोस्कोपिक एकोकार्डियोग्राम करके दे, ठीक है, कोई देयर इज नो म्यूरल थ्रोम्बोसिस, द कार्डियोवर्जन स्टार्टेड 40 joules, 80 joules, 120 joules, 180 joules, more than that in cases of atrial fibrillation. But here, in cases of predominant atrial flutter, the first thing you have to do is the electrical cardioversion, and then followed by the pharmacological cardioversion. Specific drug is used in that era. उनके यहाँ जो इस्तेमाल होती है वो इबुटिलाइट है, IBUTILIDE, इबुटिलाइट. It is antiarrhythmic agent. It's probably class 4 or 5 drug. Ibutilide not available here. But it is very very costly agent. क्या याद रखेंगे, देखिए इतना आसान से मैंने आपको समझा दिया. Fibrillation, pharmacological cardioversion followed by electrical cardioversion. If you want to do electrocardioversion early, then you have to do the echo, not transthoracic but endoscopic. If you are not sure about it, then we do rapidly acting drug. Now, this is the time to give it now. We are doing the cardioversion. अगर न्यूरल थ्रोम्बोसिस ब्रेक हो गया एकदम, तो the systemic embolism will occur. That is why in flutter there are very least chances of neuron thrombosis, very least. अगर किसी ने पकड़ा है ना तो वो क्या है, केस प्रेजेंटेशन हो जाती है वर्ल्ड में, जब ये होती है कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में, कि प्रीडोमिनेंट फ्लूटर था वो और उसके अंदर न्यूरल थ्रोम्बोसिस हो गई, वो केस प्रेजेंटेशन में आ जाता है, यानी इतना रेयर है वो उनके लिहाज से. This is another complication after acute myocardial infarction. Now look, only one thing, and that is the rate first of all. The R waves are seen very, very clearly. Determine the rate. Small square कितने? 1, 2, 3, 3, 3 to 4. अब इसको 3 को अगर आप काट दें 1500 से, ये 4 को काटें तो आपको रेट मिलेगा इसका, 4 से काटे जो भी आया आपके पास, जो रेट आया है वो आया होगा 240, no, 340. Yes, it is around 340 or 330, something like this. आप निकाल लो, खुद निकाल लो. तो क्या होता है जी, 250 to 350 के दरमियान अगर रेट होता है किसी भी चीज का, चाहे वो एटिया से अराइज हो और वेंट्रिकल, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लूटर कहते हैं. तो ये वेंट्रिकुलर फ्लूटर है, ये ट्रांजिएंट सुना है, ट्रांजिएंट होता है. Immediately it would convert into the other side afterwards. That is ventricular fibrillation. Within 4-5 seconds. ये इत्तेफाक की बात है, किसी पेशेंट से उन्होंने ले लिया है
अदरवाइज यू विल नेवर सी इन योर लाइफ। हाँ, मॉनिटर लीड पर अगर कोई बैठा है आईसीयू, वो पकड़ लेगा स्कूटर को, रिकॉर्ड भी कर लेगा उसको। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, यानी लाइव रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है ईसीजी, जिसमें फ्लूटर हुआ और बाद में फिर रिलेट किया उसने, मेरे पास है। लेकिन ये है कि वो उमन पर्सन जितने हमारे साथी हैं ना एज ग्रुप में, उन्होंने देखा ही नहीं कभी आज तक, वेंट्रिकुलर फ्लूटर नहीं देखा उन्होंने। हाँ, अलबत्ता इसके आगे वाला देखा हुआ है। इससे आगे अगर आप चलेंगे, इससे आगे चलेंगे तो वो तो देखा हुआ है। जैसे ये जो है ना टॉर्सिटी पॉन्टिस है, दिस इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की वेरिएंट है, जो कि उसके दरमियान लाए करी फ्लूटर के और उसके दरमियान टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के दरमियान की टर्मिनोलॉजी है। लेकिन उसके बाद फिर ये मसला शुरू हो जाएगा। इसको देखे नीचे डिस एरे है, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आ रहा क्या है ये है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। कोई पता नहीं है कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नहीं है, क्या है। रेट भी निकालना जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत फास्ट है। इसको आप निकालेंगे भी तो बहुत ज्यादा है। वेंट्रिकुलर रेट निकालना तो मुश्किल है, आएगा भी तो बहुत ज्यादा है। उसको निकालते भी नहीं है, हमसे मॉर्फोलॉजी से पता लगाते हैं। इतने टाइम में तो पेशेंट की भी डेथ हो जाएगी। ये फिब्रिलेशन था असल में। तो इन्होंने टॉर्सिटी पॉन्टिस, ये अलबत्ता नजर आ जाता है टॉर्सिटी पॉन्टिस, यस, इन केस ऑफ द वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वेरिएंट ऑफ इट, ये आपको मिल सकता है। इट इज पॉसिबल। दोज पर्सन हु हैव wrongly given the drugs, for example ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड की पॉइजनिंग के अंदर, दिस इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स, amitriptyline, drug is commonly used here in Pakistan बिकॉज ऑफ द क्यूटी इंटरवल। वो नापते नहीं है, तो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है, ये दवाई जो बड़ा गलत कर देती है। क्यूनिडीन है, क्यूनिन है, ये सारी ड्रग जो है डेंजरस है। अब तो क्यूनिलोन्स के बारे में भी शुबा हो गया उनको भी चेक कर लेना चाहिए था इसी चीज को। ये इतने डर गए हैं, क्या ऐसा ना ये डेवलप कर जाए। तो ये जो है ना वेरिएंट है इसका, टॉर्सिटी पॉन्टिस। ये भी सबको साथ को मिला के बताना पड़ेगा। व्हाट हैपेंड इन द मॉनिटर लीड। अब यहाँ से अब स्टार्ट करें। यहाँ से वो इवेंट हुआ है, तो बी पे गए हैं, ये सारी की सारी रिथमिया इसमें आपको नजर आएंगी। एंड रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ इसके आगे बनाया नहीं गया, इसको यहाँ बना कर देना चाहिए था कि लकीर सीधी 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 कार्डियक एसिस्टोल, सही है ना, कार्डियक एसिस्टोल। ये जो है ना डेथ पाथ है। दोबारा डेथ पाथ को याद करें, क्या डेथ पाथ को याद करें। एक्टोपिया है, एक्टोपिया डेवलप हुआ, वेदर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिरिथमिया हुआ, हमने मैनेज नहीं किया तो वेंट्रिकुलर टैकिरिथमिया डेवलप हो गया, यानी तरतीब बार शुरू करते हैं। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हुआ, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो कन्वर्ट हुआ, टॉर्सिटी पॉन्टिस कन्वर्ट हुआ, वेंट्रिकुलर फ्लूटर कन्वर्ट हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और उसको मैनेज नहीं किया गया तो कार्डियक एसिस्टोल में चला गया। यही होता है जब इमरजेंसी अटेंड आप कर रहे होते हैं, वहां पे यही चीज दिखाई जा रही होती है। इसकी देखिए आप, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स को आप लेवल करने में बड़ी शदीद दुश्वारी है। टॉर्सिटी पॉन्टिस है उसको, यानी इट इज स्विंगिंग पॉइंट्स जो है, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। ये बड़ी जबरदस्त स्लाइड है। ये देखिए एसिस्टोल है, ये इसको हो जाना चाहिए था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के, आफ्टर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और यहाँ पे जो है ना वो सीपीआर शुरू किया है। सीपीआर किया, फिर एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन के साथ किया है इन्होंने। यहाँ पे लिखा उन्होंने एसीएलएस के इवेंट्स किया, क्या क्या कर रहे हैं वो। देखिए उससे फायदा क्या हासिल हुआ कि फिब्रिलेशन
हुआ पेशेंट को, और उसके बाद जो है ना ए सिस्टोल में गया तो पहले ही ये इसको जैसे ये बैक हो रहा है वापस, पहले फिब्रिलेट करेगा, फिर फ्लूटर में जाएगा, फिर आहिस्ता 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 फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो छोटी सी पी वेव बहुत नामने के बराबर है, और बड़ी गाड़ी में पेशेंट है, मतलब इतने बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन इस पेशेंट को सेव कैसे किया गया ये देखें। असल बात ये थी, तो 95% of the patients which are coming in the New York hospital, they are salvaged by BLS and ACLS. 5% to 10% they fail. उनका टाइम पूरा हो गया था तो खत्म हो गया, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट फिर भी नहीं बनाते वो। मैंने पहले भी आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, हाउ टू मेक अ डेथ सर्टिफिकेट, हाउ यू डिक्लेयर डेथ इन अ पर्सन, फिर भी नहीं करते हैं वो। हाफ आवर मिनिमम लेते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं, ऐसे नहीं करते। इसलिए कि आपने तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, ये यहाँ आया और उन्होंने चादर उड़ा दी। अब अल्लाह ने क्या किया, आपने तो कुछ नहीं किया, मगर अल्लाह तो ऊपर बैठा हुआ था ना, उस पर ईमान लेके आए तो उसने ये सारा का सारा इवेंट खुद ही कर दिया। कुन हो जा, वो आदमी उठ के बैठ गया, और सारे लोग जो थे रहने पे भूत 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 भूत। ये जो हुआ है इंडो पाकिस्तान में, अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह के इवेंट हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। और ये जो टाइम लिमिट है, इसमें बाद 1 मिनट भी लग गया है, वरना हाफ मिनट भी लग गया है इस स्टोरी को, और उसके दरमियान में उन्होंने कुछ देखा है, ठीक है ना। बरज़ख जिसे आप कहते हैं, मतलब हवाले बरज़ख, अजीब अजीब किस्म की स्टोरीज आपको मिलेंगी। आप जाएं जरा देखें गूगल पे, सस्पेंडेड एनिमेशन, उसके अंदर जो है ना वो क्या देखते हैं, एक फिल्म भी है इसके ऊपर, पूरी पूरी फिल्म है। 4 डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने हार्ट को बंद करते हैं बाई इलेक्ट्रिकल करंट देके, और फिर उसके क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं उसका, ये पूरे इवेंट्स करते हैं। तो जब चौथे की बारी आती है वो नहीं बच पाता, बाकी 3 तो बच जाते हैं, लेकिन वो अपना अहवाल तीनों ने सुनाया है। वो क्या देखते हैं उस फिल्म में नजर आ रहा है, अब आप देख लीजिए उसमें क्या वो नजर आ रहा तो है वो आप खुद देखिएगा। इसमें अगर आपने BLS ACLS नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि लाइसेंस तो दे दिया, दे हैव गिवन यू, बट वी आर प्रैक्टिस लाइसेंस किलर्स। यहाँ पे जो है ना NICVD में स्कोरिंग इनकी है 75%, 65 to 75% सल्वेज कर लेते हैं ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक। इस स्टोर की जो है वो और कम है, 40% से भी नीचे है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जिसने जो मिस करेगा तो वो ज़्यादा, अगर ये रिकॉर्ड हो गई फर्ज करें, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। आई डोंट नो वेदर रिकॉर्डिंग इट कैन बी, वी आर रिकॉर्डिंग और नॉट, तो मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन आई ट्राई। इसको करें रिपोर्ट, मारिया जलील रिपोर्ट दिस। हाँ बेटा 15 मिनट में ऊपर आओ, चलो। हाँ मारिया जलील। Sir, first of Sir, all, first of all, the patient the is patient ready. is ready. सिवियर ब्रेडिकार्डिया, Yes. सिवियर। D2 को देखें आप, छोड़ दें, छोड़ो बाकी। सिवियर है, वेरी वेरी सिवियर। 28 to 30 है, निकाल के देख लीजिएगा, ये 28 to 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब तो दूसरी बात क्या है इसमें, अहम बात, दरमियान में पी वेव Sir, आ गई। Sir, नहीं नहीं, एक मिनट, दरमियान में पी वेव आई है ना, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यानी ATL का रेट जो है, एक दरमियान में ATI है, पी वेव के दरमियान का रेट अलग है, और वेंट्रिकुलर का रेट अलग है। तो इसको क्या कहते हैं, sir, third degree मिसमैच। heart third drop degree होगा heart फिर. drop नहीं होगा नहीं, फिर एक मिनट, stage नहीं नहीं, dissociation. आपने वो थी है मिसमैच,
between the atria and the ventricle. The atria are working separately than ventricle. It is called AV dissociation. Third degree heart block. Third degree heart block. This is third degree heart block. Now the treatment has been changed. Atropine should be given at once. 0.5 milligram, then 0.5 milligram. इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, 15 मिनट के बाद फिर 0.5, अनलेस कि वो आपके पास जो है ना कैथेटर लैब में चला जाए और टेम्परेरी पेस मेकर पे डाल दे. And then afterward decide after angiography etc. whether the permanent pacemaker is needed or not. This is the answer. And it is one of the complications we usually see after in old ages, specifically speaking, old ages. The third degree heart block after the ischemic, after the ischemia. Now this is Amaria Jalil, Sabah Amaria Jalil, Aisha, whatever, to whom it may concern. ये क्या है ये? What is this? QRS इंटरवल देखें आप, 0.14 से ज्यादा है. पैटर्न देखें, RSR डैश पैटर्न, RSR पैटर्न. लीड 1 2, ये कौन सी साइडेड लीड है? लेफ्ट साइडेड है, राइट साइडेड है? लेफ्ट साइडेड है. लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. यस, न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. New left bundle branch block develops when the anterior descending artery, which is the whole supply of the left bundle, whole supply वहीं से आती नहीं कहीं से, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. पेशेंट अराइव हुआ है अब आपके पास, काफी देर बाद आएगा तो इसके ये ले आया है आपके सामने. इसमें एसटी डिविजन अभी भी है, यहाँ पे आप देखें मौजूद है, देखिए मौजूद है, इधर अभी भी मौजूद है. और बंडल ब्रांच ब्लॉक जो सप्लाई इसकी छोड़े, यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं. तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के में आया है ये, चेस्ट पेन हो चुका 4 घंटे पहले, अब ये सूरत हाल पैदा हो. इससे आपने डायग्नोसिस पकड़ ली, कार्डियो स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई कराया तो हाईली पॉजिटिव आ गया. अकॉर्डिंग टू दी WHO अभी भी जो है ना फिब्रिलेटरी एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते. 24 TPA की बात हो रही है खास तौर पर. You can use because it will cause help in the remodeling of the heart or reduces the ischemic penumbra. इसलिए उनको अलाउ करते थे कि आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, लेकिन बेस्ट थेरेपी ये है इसमें कि कोरोनरी एंजियोग्राफी शुड बी डन एट वंस एंड प्राइमरी PTSA शुड बी डन एट वंस. अब एट वंस कर रहा हूँ मैं. इतनी फैसिलिटी आपके पास अगर हो जाए, काश. यहाँ तो रीडिंग ही नहीं आती इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, रोने की तो बात ये है ना. रोने की बात है सर. आप ये इसीलिए अपने सीनियर्स को दिखाइएगा, वो जो पढ़ाए भाषाएं बातें करना शुरू करते हैं. इसमें पता नहीं फाइंडिंग है, मैं 1.5-2 पेज लिख दूंगा इसके ऊपर आराम से, इतनी फाइंडिंग है. लेकिन बहरहाल कहने का ये है कि चलो वो ही बताएं जो मैंने बताई. लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, because RSR pattern is there with increased QRS duration. It is complete left bundle branch block. इमीडिएट ट्रीटमेंट की तो जरूरत है ही नहीं ना. असल मसला तो आ रहा है जो पीछे वाला है, जिसने कॉज किया है, उसको मैनेज करें इसको. बाकी तो इसमें कितना ब्रेडिकार्डिया भी नहीं है ना, कुछ इतना ज्यादा है कि उस पर आप एट्रोपिन लगाएं. इसमें इतना ज्यादा ब्रेडिकार्डिया तो है ही नहीं. Now these are the arrhythmias. एक क्वेश्चन है कभी फाइनल ईयर वालों के लिए, कि BCQ बहुत सारे बनते हैं. मैंने क्या बोला था आपसे,
the commonest, earliest warning of developing tachyarrhythmias in the peri or para ACS zone is number one, A. Premature junctional contraction, slow atrial fibrillation, multifocal PVC, and wandering pacemaker. Answer: any final year student. So, wandering pacemaker. Wandering pacemaker. Correct. The most dreadful arrhythmia, मतलब बड़ा आसान सी बात है, which can be manageable on time after myocardial infarction. दूसरा क्वेश्चन A B C D, which can be manageable मैंने कहा on time अगर पेशेंट अराइव कर दे तो A atrial fibrillation, B atrial flutter, C ventricular tachycardia, D supraventricular tachycardia. VT सर VT है, VT जो है is the horrible and dreadful complication. और तीसरा जो BCQ है लास्ट वाला, इसमें जो है ये as far as global is concerned, whole world, the commonest arrhythmia, this arrhythmia seen after myocardial infarction is number one, A, is premature atrial contraction of APC, B, premature junctional complexes, B, C, premature ventricular contraction, PVC, that is called. And D जो है वो है स्लो एट्रियल फिब्रिलेशन. मैंने कहा पेरी और ग्लोबली, पूरी ग्लोबल को अगर आप देखें सारे रिथमिया जमा कर दें, उनमें से कॉमनेस्ट क्या है? सर पोस्ट एमआई तो एपीसी होगा. यस, ये सही आंसर है. ग्लोबली स्पीकिंग जो है, जो रिकॉग्नाइजेबल भी है, वो आप आसानी से पकड़ लेते हैं. वार्निंग पेसमेकर तो ट्रांजिएंट फिनोमेना होता है, वार्निंग होती है, अगर आप पकड़ लें तो अच्छी बात है. गुड, सही बोला जी आपने, ठीक बोला. Another complication is seen as the rupture of the left ventricular wall. See here, rupture, a fissure occurs, and it's communicating. It is wide fissure, and there's a whole big one. इधर से हो सकता है rupture, यहाँ भी हो सकता है. Septum के अंदर there is rupture, and there is a hole that is called acquired ventricular septal defect. इसका तो इतना प्रॉब्लम नहीं, इसका प्रॉब्लम है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल का, because it will communicate with the pericardial sac and it will cause what is called as the cardiac tamponade. If the dire medical emergency, the patient will die in 15 minutes. 15 मिनट में डेथ हो जाएगी. अगर आपने क्या किया, एको करना है और नीडल डाल दीजिए बस. ये नहीं सोचिए कि हार्ट डैमेज होगा, कुछ नहीं होता. बहुत आसानी के साथ जैसे ही आप डालें नीडल, उसको आप कनूला लगा दें, एपिगैस्ट्रिन से अप्रोच करें सुपीरियर. जैसे ही आप थोड़ा ही आगे जाएंगे, अचानक उसमें जो ना रेडिश जो है ना ब्लड आना शुरू हो जाएगा विद फुल प्रेशर. इतना होता है, मैंने जो देखा है वो कि दीवार जो है ना वो सामने जो थी, 4 फीट दूर थी, वो तक जो थी वो खराब हो गई. और कनूला जल्दी से डाला हमने, और वो जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, अल्लाह ताला उनको जिंदा रखे, उन्होंने पेशेंट बचा लिया. मुझे अभी तक याद है वो. हालांकि वो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ बहुत सख्त मिजाज बंदा है, बहुत सख्त, टेरेबल. उसने बचा लिया, पेशेंट बचा लिया मेरे सामने.
इसलिए ये कार्डियक टेम्पोनेट कैन इसका सर्वाइवल हो जाएगा अगर ऑन टाइम आपने कर दिया तो हो जाएगा, नहीं हो तो डेथ चाहिए। Acute left ventricular failure is the complication of the left ventricular walls. If they are infected, it is a late appearance after 2 hours, 3 hours, 4 hours afterwards. And there is pulmonary edema. देखिए pulmonary edema जो रेडियोलॉजिकली डिटेक्ट करते हैं, and in radiology we detect the acute LVF. So I will show you the X-rays. When I will show the X-ray, I will explain it. Acute left ventricular failure, because I have to discuss the congestive cardiac failure also. वो भी मुझे करना है. Acute MR can develop because of the rupture of the capillary muscle. Acute MR. The other cause of acute MR is trauma. Rheumatoid. Trauma to the chest valve. That is very important. Or the Peri mitral area infarction. Or in case of atrial myxoma, detached and thrust on the mitral valve. ये बहुत अनकॉमन कॉज है, इसको छोड़ देना. कॉमनेस्ट तो यही है कॉज acute की. Aneurysm is formed, weakness that it appear after 3 months. Left ventricular aneurysm appears. It is detected by the echocardiogram on the radiology, and it can be chosen by the ECG also. ECG में जो finding है, the thing is that giant T wave occurs in the precordial. All V1, V2, V3, इतनी बड़ी वेव आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी और नेगेटिव होती है. Negative giant T waves on all leads, specifically V4, V5, V6. उससे पकड़ लेते हैं, लेकिन echo is the answer. Surgical repair is needed. Dressler syndrome ये आपको आता है. पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन सिंड्रोम नीचे वाले को मैं नहीं एक्सेप्ट करता, उसको अलग बताया जाएगा, उसको छोड़ दें. It occurs after 2 to 10 weeks after the post-mayocardial infarction. आप P plus P plus P plus P याद रखें. P for pyrexia, P for pain, means chest pain, P for pruritus, P for pericarditis, and P for patient responded by giving the anti-inflammatory drugs. Choose one. Aspirin is the very good option here. Dressler syndrome, that is post myocardial infarction syndrome. A very late complication. Neural thrombosis occurs. I have seen yesterday this case. Now it is reduced. Now, 6 months back, he has got the infarction of this area, and there are neural thrombosis. Do you like to give heparin? Do you like to give TPA? Do you like to give some other agent to resolve this? Do you? If you resolve by this fibrinolytic agent, it will back up into embolism, and the systemic embolism will occur. उसको कभी भी नहीं छेड़ते. The only one thing you can do, either you go for the in catheter surgery experts, जिसके होते हैं, they pick by catheter the thrombus, or you will wait and give the platelet inhibitors. Gradual इसको जैसे साबुन नहीं होता है, उसको मेल्ट कर होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह वो मेल्ट कर देता है. पहले उसका था 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर, अब है उसका 1 मिलीमीटर. अभी पेशेंट कल आया था कंप्लायंस के लिए. Mitral valve insufficiency occur afterwards. Of course, dilated cardiomyopathy, it will cause mitral valve insufficiency also. Dilated cardiomyopathy will cause left ventricular dysfunction. Cardiac failure will be discussed in detail, definitely, afterwards. Secondary prevention should be done. The last thing, the platelet inhibitors should be used always. ACE inhibitors used in the low dosages, rather the receptor blockers.
Valsartan, alpha plus beta blocker with intrinsic sympathomimetic activity as antiarrhythmic agents. They are also beneficial. And carbidopa is the best drug which is using in the whole world. Carbidopa, HMG co-reductase inhibitor should be used always, forever, forever. ये दो ड्रग को तो आप पूरी जिंदगी को खानी पड़ेगी, इनहिबिटर को, प्लेटलेट्स एंड एचएमजी को रेडक्टेज प्लस डैश डाइट प्लानिंग. Dash means dietary approach to stop hypertension. It is the diet of choice of the myocardial infarction. Secondary prevention. Physical activity will be allowed gradually, 0.5 kilometer, then 1 kilometer, then 1.5 kilometer to 2 kilometer slow walk daily, and monthly compliance to a cardiologist other than me. Many cardiologists can be complied. No, I am not that type of a person. मैंने इतनी एबिलिटी नहीं है. जिनको दिखाना है उनको दिखाएं, तब्बा में दिखाएं या एनआईसीटी में दिखाएं, मारिया जलील को दिखाएं चले. मैंने बड़ा बड़ा ऑनर दे दिया मैंने, ठीक है ना. बिकॉज द थिंग इज दिस इज एक्चुअली अ रिकॉर्डिंग पर्पसेस. वी आर रिकॉर्डिंग दिस, ट्राइंग टू रिकॉर्ड. So I think we will meet on the Thursday because there is no uh, time for the question answer session. Then you will ask those questions. So from my side, my son is actually blocking now and options, see the options, and he is recording. हाँ.